Once again, welcome to our channel, and today we are going to talk about the second chapter of Geography Class 9. In this video, we are going to know about the physical features of India. So, before starting the chapter, I want to tell you a basic thing about the India and its formation. India और उसकी formation के बारे में हम लोग बात करेंगे physical features की. So before starting the chapter, we goes to a small story like this, that in a 400 million years ago, our Earth had a single landmass. हमारी जो Earth थी वो my single landmass थी, and that single landmass of the Earth is known as Pangaea. And the water body which covered that whole continent is known as Panthalassa. So as we know that our Earth is made up of 7 major plates and more thousands of minor plates. So starting in this chapter, these earth crust plates moves in different variation, due to which that the supercontinent Pangaea is divided into two continents. That one continent is known as Gondwana and second continent is known as Eurasia. So, with the movement of the tectonic plates, that supercontinent Pangaea is split into two parts, like as we see in the present that we saw the 7 continent. हम लोग आज present में 7 continent को देखते हैं. तो वो 7 continent पहले जैसे आज हम देखते हैं ऐसे पहले नहीं थे. तो ये पार्ट क्या थे? ये सब आपस में जुड़े हुए थे. And today's continent and the countries like India, Australia, South America, South Africa, Antarctica are the part of the Gondwana land. And Eurasia, it means it consisting the European countries, North America, and the other rest part of the Asia. So, अगर हम और look at if we look at all these countries, the variation, the soil formation, the variation, the vegetations are similar, look like as the soil and the mountains, there have some similarities we see. तो ये कुछ similarities हैं जो हमको दिखाई देती हैं. Now moves towards to our chapter. So we are going to know about the movements, types of movements. The earth crust have several tectonic plates, that the movement of the plates. Now we are going to know about the movement of the tectonic plates. So tectonic plates, the movement of the tectonic plates has been categorized in 3 different forms. So these 3 forms are as, first is your convergent, पहला हमारा convergent है, second is the divergent, third is a transform. So in this movement, in these three, there are 3 types of movements in a tectonic plate. First is our convergent movement, second is our divergent, and third is your transform. So in the first, the movement which we going to know about, that is our
convergent movement. In a convergent movement, the tectonic plates moves towards each other. The tectonic plates moves towards each other. By this, one tectonic plate goes down and second one moves upward, and it's look like as the like this. So this, when the two tectonic plates moves towards each other like this, one tectonic plate moves downward and second one is upward, and they form the mountain. और वो क्या फॉर्म कर जाएंगे? They form the mountain. Next is a divergent. In a divergent movement, the tectonic plates moves apart from each other. डाइवर्जेंट में क्या होगा? पहले वाली तो जो थी फर्स्ट इज योर कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट में क्या होगा? टेक्टोनिक प्लेट्स एक आगे आएगी, एक नीचे को जाएगी और एक ऊपर को जाएगी, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा आपका माउंटेन्स का. सेकंड में क्या है? दो टेक्टोनिक प्लेट एक साथ जुड़ी है, देन दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे. देन थर्ड इज योर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. इन दिस the tectonic plates collides to each other. एक दूसरे से टकराते हुए निकल जाएंगे, एक आगे को जाएगी, एक पीछे को जाएगी, मतलब कि ट्रांसफॉर्म करती हुई जाएंगी. तो these are the types of tectonic movements. After this, one more thing, that the convergent movement or convergent boundary, it is responsible for the earthquake, and already I told you about that India, Australia, Antarctica, South America and South Africa are the part of the Gondwana land. Now, after that, the major physiographic division of India. The major physiographic division of India are as first is your the Himalayan, second is your the northern plains, third is your peninsular plateau, fourth is your the Indian desert, sixth, fifth the coastal plains, and the last is your the islands. In the map of India, we are going to represent it. The Himalayan ranges lies here from the north, entire north and the northeastern part. So this is your the Himalayan region. This one I am going to shed these parts like this. And then comes to our northern plains. तो यहाँ पे मैं कोड ब्लॉक बना दे रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान रहे कि नॉर्दर्न प्लेन द हिमालयस के लिए हम लोगों ने क्या डिनोट किया था. नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. सो नॉर्दर्न प्लेन्स कवरिंग द एरिया लाइक दिस. सो नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टैंड स्ट्रिप्स का यूज करते हैं फॉर द नॉर्दर्न प्लेन्स. एंड फॉर द पेनिसुलर प्लेट्यू हम लोग सिंपली लाइक दिस. सो द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइक दिस. नेक्स्ट इज योर द इंडियन डेजर्ट. We mark the plus sign. Indian desert. The coastal plains we left the blank. जो बचा हुआ जो ब्लैंक है ये हमारा कोस्टल प्लेन्स का हो जाएगा, लेकिन इसको हम ब्लैक से ही पूरा मार्क कर देंगे इस लाइक दिस, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. लाइक दिस. तो उसको हम इंडिकेट इस तरीके से कर देंगे. एंड द आइलैंड्स, उसको हम ऐसा मार्क कर देंगे. तो आइलैंड यहाँ पे जो है उसको ब्लैंक ही रखते हैं, क्योंकि देयर आर ओनली टू आइलैंड. वन इज योर अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सेकंड इज योर लक्षद्वीप आइलैंड. सो दिस इज द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. तो मैप में भी हम लोग को फिलहाल इतना पता चल गया कि हिमालयन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे द हिमालयन रेंजेस के ब्रीफ. वी आर गोइंग टू डिस्कस in brief about the Himalayas, about